वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज की क्लास में हम आपको एक ट्रायंगल का क्वेश्चन बता रहे हैं जो 2018 के क्वेश्चन में आया था और भी 4 नंबर के लिए, और यूपी बोर्ड में यही क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए भी आया था। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, डी इज ए पॉइंट on the side of BC such that BD is 1/3 of AC. Prove that 9 times of AD square equals to 7 times of AB square. तो इसमें आपको पहले लिखना होता है गिवन in triangle ABC is a triangle ABC is an equilateral triangle. AB equals to BC equals to CA. BD equals to 1/3 BC. प्रूफ करना है आपको 9 टाइम ऑफ AD इक्वल टू 7 टाइम ऑफ AB स्क्वायर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा AE परपेंडिकुलर टू BC। और हमारे पास क्वेश्चन होता है, हमारे पास क्या है यहाँ पर AE परपेंडिकुलर टू BC, so that triangle AEB congruent to triangle AEC by RHS। RHS का मतलब यहाँ पे होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल and this is perpendicular 90 degree and this is the common side. AE is the common side, so it is a RHS congruence is clear. Therefore, BE equals to AC by CPCT. Right now, BC equals to 2 times of BE. This is clear. Otherwise, we can write 1/2 BC equals to BE. After this, one thing is more required here. We need DE. Then BDE is collinear. Then BD plus DE equals to BE. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में आपके पास क्लियर हो जाता है, BE की वैल्यू आपके पास 1/2 है, BD आपको पता है, हमें DE निकालना है। तो BD हमारे पास आपके पास कितना लिखा है, 1/3 ऑफ BC। तो दिस इज बिकेम 1/3 BC plus DE equals to 1/2 of BC. BC we carry to that side, 1/2 BC minus 1/3 BC. From here, LCM is 6, BC we have to take it out common, then here 3 minus 2. Then it will become 1/6 BC. That is equal to DE. Right now we have the right angle triangle AED. In right angle triangle AED, by using Pythagoras theorem, that AD square equals to AE square plus DE square. But one thing is more here, we are using that we are finding AE.
this is 3. In right angle triangle AEC, then AE square equals to AC square minus EC square. But EC is 1 upon 2 of, this is AC equals to BC, and this is 1 upon 2 of BC square. Then it is became BC square minus 1 upon 4 BC square. Then this is also became 4. Here became 4 BC square minus BC square. Then it is 3 by 4 BC square. This is up till it is clear. And then after that, little solution will be here. And then we see further. Then from equation number 3, from equation 3, and this is 4. Then again, and 4. AD square equals to AE square plus DE square. AE equals to how much? AE square equals to 3 by 4 BC square, and this is 1 by 6 BC square. Then it is 3 by 4 BC square plus 1 upon 36 BC square. Then we add all of them, 36. Here it is coming 4, 9 there, then 3, 7 BC, and here it is became 1 BC square. This is became 28 upon 36 BC square. This is coming 7, this is become 9. And then after this, our question will be clear. Then AD square equals to 7 by 9 BC. This is multiplied by here. It is became 9. AD square equals to 7 BC square. But 9 AD square equals to 7 AB square, because AB equals to BC equals to C. Hence proof. और इन दिस वे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 4 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।